जयधारी माँ नमस्ते। आइए जुड़िए मेरे साथ 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 विद साइना में। दिल से दिल की बात करेंगे। द लाइट विद इन मी ऑनर्स द लाइट विद इन यू। Jaythari Ma, very welcome, sir. Very welcome. Ji. Thank you so much for inviting me. Sir, thank you for your time. Thank you for your very, very precious time. We welcome our audience. Sir, मैं कुछ पढ़ के थोड़ा सा I'll just introduce and then I'll request you to please take over. Yes, ma'am. मैं ये पढ़ रही थी सर, ये तो हमें सिखाया जाता है. Bones are a living tissue and there are 206 bones, sir, in our body. Ji. 206 bones. And the major functions of the skeletal system, it's just to set the tone, sir. The major functions of the skeletal system, 206 bones: body support, facilitation of movement, protection of internal organs, storage of minerals and fat, blood cell formation. Now, this is how important bone health is. Ji, sir, I request you to please talk about yourself and all that you do, and then we'll start the Q&A, sir. Okay. So to begin with, my name is Dr. Aashish Chaudhry. I'm an orthopedic surgeon by practice since 2004. And for last 20 odd years, I've been, trying to treat and make people better, whosoever is suffering from bone and joint ailments, not only medically, but there are hundreds of conditions where, as a surgeon, you have to actually relieve the patient of the agony by doing some kind of surgical procedure. All these 20 years, one common goal has been not just on, trying to treat the diseased person or the diseased joint or bone, but also how do we actually go from treatment or therapeutic approach to a preventive approach. Whatever functions you just mentioned, in fact, bone is also a type of organ. It's not just a skeletal system which just supports the muscles and other parts of the body. It is a kind of organ because it exchanges minerals, vitamins across the blood. Blood is going inside. Blood is bringing some things to bone. Blood is taking out, toxins out of the bone. There is a dynamic process which keeps on going. It's not that once the bone is formed and the child reaches adulthood, that bone will remain the same. It's a very dynamic process. The old cells are going out, getting depleted. The new cells are adding on to the surface. So this kind of such a dynamic thing can only happen when there are so many activities which are coordinating. And in fact, like what we see, people say that eyes can tell you a lot of things about the health of the individual. Likewise, the bone health also is not just the indicator of the bone per se. It also indicates the patient might be or the person might be suffering from many other things in the body. So it's a kind of reflection on the overall health of the individual. So I would say, it apart from liver, kidney, brain, heart, everything is so important. We can't say that brain is better than, is more important than heart, or the bone is more important than other organs. It is just the fine symphony or the synchronous manner in all these things interact, integrate,
that we are able to do all kinds of normal activities. Wherever there is a small break in the chain, things start to fall apart. One thing leads to the other, and that cascades causes lot many other things. So without going too much into the detail, I think there's a setting point that bone health becomes uh, extremely important for every individual right at the time of birth till the last breath you take. सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे ये पूरा रिन्यू होती हैं क्या द इंटायर? हाँ जी जी। पूरा पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है, आप किसी भी बोन की बात करें, वो पूरा रिमॉडलिंग होता रहता है। पुराना जो बोन सेल पुराना हो गया, वो डेड हो जाता है। देन देर आर सेल्स इन द बॉडी, इन द बोन्स विच आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। वो बोन को खा जाते हैं, डेड बोन को, उसको निकालते हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट आता है, वो नई बोन उसके ऊपर डिपॉजिट करता है। फिर क्लास्ट आता है, पुरानी हटाता है, नई डिपॉजिट करता है। सो दिस प्रोसेस keeps on going. So every 4 to 6 years, the entire skeleton becomes new. Okay? 5 से 6 साल में सारी नई बोन्स नई हो जाती हैं। हर 5 से 6 साल में बोन्स नई हो जाती हैं? नई हो जाती हैं। It's getting renewed every 5 to 6 years. Absolutely, absolutely. And as the age progresses, so there are fine balance. Again, there is a balance of two activities: bone removal, bone addition. So when we are reaching the menopause in females, all the senior citizens are approaching, even the male patients going into the elderly age group, the bone removal keeps on going like that or keeps on increasing, the bone formation decreases. So there is an imbalance. और जैसे हम लेडीज में बताते हैं कि जैसे ही मेनोपॉज, उनके अंदर ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज जो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो पूरी लाइफ रहता है, वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव होता है फॉर द ये वो खाने नहीं देता बोन को बहुत जल्दी जल्दी जी। तो वो जैसे ही वो हटता है प्रोटेक्शन, द सिक्योरिटी गोज अवे एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फॉल अपार्ट सो फास्ट। सर आपने मेनोपॉज की बात करी है, सीनियर सिटीजन की बात करी है। सर let's talk in a few aspects. Let's start by बच्चों के बोन हेल्थ के बारे में। बच्चों के बोन हेल्थ की केयर, how important is outdoor activity for them? What kind of food will work for them? So let's talk about children, then we come to teenagers, sir, then we come to women, senior citizens, men, women together, but we'll discuss menopause, we'll discuss pregnancy, sir, but बच्चों से शुरू करते हैं जी सर। तो सब बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक जो मेजर डिफरेंस हम देखते हैं एज डॉक्टर्स, जो ग्रोइंग स्केलेटन है, यानी कि पैदा होने से लेकर 17-18 साल की उम्र तक जब तक स्केलेटन ग्रो करता है, वहां पर कोई भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो वो बहुत जल्दी दिख जाता है, कुछ महीनों में, साल में दिख जाता है। बिकॉज ग्रोइंग स्केलेटन है, जैसे ही बोन में डिफॉर्मिटी होगी वो टेढ़ी होने लग जाती है, क्रम्बल होने लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। सो बच्चों का एक जो भगवान ने एक अच्छा बनाया है कि बच्चों में कभी भी कोई बोन दिक्कत हो, बोन की प्रॉब्लम होगी तो वो पेरेंट्स को भी दिख जाएगी और डॉक्टर्स को दिखी जाती है। वेराज ये बिल्कुल ऑपोजिट है, जब स्केलेटन पूरा मैच्योर हो गया, उसमें जो भी डैमेज हो रहा है वो कभी भी कोई एक स्पेसिफिक साइन नहीं बताता और धीरे धीरे उस दिन पता लगता है जब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोविड ऐसा टाइम था जिसमें ये चीज और एपरेंट हुआ कि बच्चों को बाय फोर्स फॉर मेनी इयर्स दे वर कन्फाइंड टू इंडोर्स। देयर वाज हार्डली एनी सनलाइट, देयर वाज हार्डली एनी आउटडोर एक्टिविटी, they were always glued to the system. The food habits went for a toss, and no kind of nutritious food, I would say more of junk food and other things started to play a havoc in kids life. And the moment COVID got over and kids started to go out, started to play, so many parents came to us कि हमारा बेटा सिंपल 4 सीढ़ी चढ़ने में भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो चढ़ ही नहीं पाता है, ऐसे चढ़ता है जैसे बूढ़े लोग चढ़ते हैं, ना वो खेल पाता है, उसके पैर टेढ़े होने लग गए हैं, उनका बोन पेन्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेंट किया। एंड टू आवर सरप्राइज, when we got their calcium levels tested, when we got their vitamin D level tested, when we got their x-rays done, everybody has got severe forms of rickets, different stages of rickets, which is a very common bone problem in the kids. As low as
7-8 years, they were manifesting signs of rickets in the wrist, in the knee, hip joint, spine, all over the place. So that something which came as an alarm. Of course, that was a a man-made forceful confinement of the kids. Of course, they could not go out and play. Not only is the sunlight exposure becomes important, but also the movement and playing. That's a kind of a resistance and a isometric muscle exercises that also improves the bone health. So no activity, no sunlight, lot of junk food, the combination of all these few factors caused real havoc on the bone health of the kids during the 3 peaks. So I would say in the kids, even though they have come out of the COVID period, general lifestyle change which has happened even after that, work from home, live classes, online classes, and too much of homework on the mobile phones and gadgets, that actually is still continuing. And I think it has become a norm now. So unless and until the parents take this responsibility of exposing the kids to some physical exercise or some activity, at least for 40 to 50 minutes in a day, I mean, this is not going to actually change. Even they are still living in the same sedentary lifestyle, and somehow the food habits have to change. It has to be the school administration, the government has, mandated avoidance of so many foods in the schools because kids will not have more healthier options. They will start eating junk. I mean, they can't manage. That thought process, the mental maturity may not be there at that age. So responsibility lies with the school, with the parents, and of course the government. Whatever has to be done, they are doing their bit to avoid exposure to junk food and many such factors. And uh, initiatives like Khelo India and the focus on the sports, focus on outdoor activity, and of course the awareness of the screen time, reducing the screen time. Those factors are actually playing now an important role in reversal, going back to the simple life of enjoying outdoor activities rather than just confining within their rooms and only on the study table. सो बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है. इट्स Absolutely. नॉट जस्ट फॉर देयर, हम कहते हैं चलो चेंज हो जाएगी, बच्चे के लिए खेल के आ जाओ, ये चेंज नहीं होगी. इट इज़ गुड, तन, मन, शरीर, बोन्स, ब्लड, स्किन, पसीना. दिस इज़ सो Absolutely. इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड. It's very सर, important. अफोर्डेबल डे टू डे खाना बच्चे के लिए भी, सिंस हम खाने के पे आ गए हैं, तो हम वो आप एक ऐसे समझा दीजिए कि लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए अफोर्डेबल खाना जो हमारे रोज के किचन में है सब. सो बेसिकली देखें, हर एक का खाने के लाइफस्टाइल्स क्या क्या वो खाते हैं. कोई किसी का स्टेपल डाइट में रोटी आता है, किसी का चावल आता है, किसी का साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, किसी का फिश है, किसी का प्योर वेजिटेरियन है. सबकी किचन अलग है. सो उनको जो भी न्यूट्रिशनस चीज देनी है वो अपनी किचन में से ही देनी है. देयर इज नथिंग विच यू हैव टू सोर्स फ्रॉम आउटसाइड विच डजंट बिलोंग टू योर पैलेट, इट डजंट बिलोंग टू योर रीजनल फूड हैबिट्स. सो जो भी हमें अफोर्डेबल लेना है वो उसी फूड हैबिट्स और सीजनल जो चीज. बहुत सारे लोग आजकल फोर्सफुली मैंगो चाहते हैं दिसंबर में भी मिले और विंटर का समर में चाहते हैं. आई थिंक दैट हैबिट, आई थिंक वी कैन अवॉइड दैट. Whatever is available in the season is good enough, to meet the requirements of diet. People go mad after taking supplements for calcium and other things, multivitamins, expensive multivitamins. People go mad after protein supplements, which can actually do more harm than good, because they just take the supplement. They don't know what else, what are the precautions to be taken if you are on some kind of supplements. As simple as keeping the body hydrated by increasing your water intake or the fluid intake. I mean, that's missing. You talk to 10 people around in your family, how many would be having 3 to 4 liters of water a day? I don't think so. There are three common products which, in my routine practice, I'm started to give all my patients. One is the healthy based supplement. जी. Even if they can't afford a capsule, okay, they can use a milk with a raw haldi and use it. Then we advise for sattu,
which is again from chana, vegetarian. Most of our Indian population is vegetarian. That's something which has come very handy and as a good replacement, an affordable replacement to any other protein supplement which costs thousands of rupees for, and they have minimal side effect because chana is easily digestible by our system, doesn't lead to stone formation and other, challenges. And soybean, again a very good alternate for people who are belonging to vegetarian community. I mean, they, everybody says, somebody gets a fracture, कहते हैं कि हमें तो मजबूरी में non-veg खाना पड़ेगा, सूप पीना पड़ेगा, होता है, it's not required. All vegetarians can heal their bones very well, and even if they have osteoporosis, they still have very good options. So, I mean, if you go for cheaper option, soybean, makhane, and all these things are very reasonably priced. Those can be easily used. If you want to go one notch higher for vegetarian, quinoa is perfectly used with mixed with salads, and and that provides a very high rich source of protein. So you have to take calls based on whatever kitchen you have a continental background, you want to make continental dishes, fine. It can be done in your kitchen. If you have a rice, okay. In rice, it becomes a challenge. All our diabetic patients, we have got a very big population for diabetes. Rice is something which, if you have a parboiled thing, it causes less harm. It has got a less glycemic index. It doesn't cause too much of alteration in sugar levels. So we need to educate the common people किस तरीके का चावल खाना है, कितना खाना है. Okay, so that thing has to be very common in all religions, all customs, all types of kitchens. आपका dinner early and small, आपका breakfast can be big, and lunch can be a moderate kind of consumption. I think that perfect combination, you will never get that bloating sensation, acidity problems, constipation issues. A lot of middle-aged females with diabetes, they complain of all these issues. And mostly the problem lies in the kitchen, problem lies in the food habits, nothing else. If you try to fine tweak that, avoid supplements so far as possible. Avoid, I would say, avoid going to a doctor asking for 5 types of supplement. I want zinc, I want B12, I want vitamin D. There are only one or two things which may not be adequately available in a vegetarian diet. That's B12 and D. There are very basic things, supplements available. Again, not to be taken all throughout the year. Every supplement, including a calcium, we have to maintain a drug holiday. There has to be a drug holiday. कुछ भी आप लेते हैं, हम तो सिंपल फॉर्मूला ये बनाते हैं कि 50 साल से अगर नीचे हैं तो ड्रग हॉलिडे ऑल्टरनेट मंथ होता है. 1 महीना लिया, 1 महीना छोड़ दिया. 4 साल से ऊपर है तो ड्रग हॉलिडे 15 दिन का हो गया. 1 महीना लिया, 15 दिन छोड़ दिया. ठीक है. तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हमें बनाना है. और विटामिन डी ऐसा है, जो आपने जैसे फोर्टिफिकेशन की बात करी, विटामिन डी हम पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम सनलाइट में जाते हैं, हमें विटामिन डी तो बहुत मिलता है, इंडिया इज फुल ऑफ सनलाइट, बट द प्रॉब्लम इज, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, वी हैव गॉट सो मच ऑफ सनलाइट, बट द इशू इज if you are going out fully clothed, your hand and face is exposed, it doesn't really give you enough vitamin D. Skin complexion causes a great difference in the type of absorption. So what is recommended is early morning hours, say around 7 to 11, जो सुबह की हल्की धूप है उसका 30 मिनट्स का एक्सपोजर मिनिमम चाहिए, और वो भी 40% बॉडी एक्सपोज करके, which becomes difficult in Indian scenario. And that time most of the males are, they going to the work, females are working indoors. So I don't think all three conditions can be fulfilled by most of the Indians every day. So what do we do? I mean, are there foods rich enough in vitamin D? Maybe some broccoli, but that's an expensive vegetable. Maybe I would say fortified products, again expensive. So what do? We don't have much. And non-vegetarian, I think our Indian population mostly vegetarian, so they are already devoid of that kind of source of vitamin D. So what we recommend is that if you don't need calcium on a regular basis, if you are taking good amount of milk or milk product in a day, but vitamin D is something, if you are a vegetarian, you don't have that kind of sunlight exposure, 2 doses of vitamin D in a month is good enough.
That is, I always tell them less than 12 years, once a month, more than 12 years, twice a month, दो छोटा सा vitamin D liquid shot or something, any formulation. 12 साल से नीचे हो तो एक ले लिया महीने का, 12 साल से ऊपर है 2 ले लिया. गुड इनफ फॉर एवरीवन. सो ये अगर 2-3 चीजें हैं जो हमें डाइट से नहीं मिलती, उस पर हम फोकस कर लें. ड्रग हॉलिटी का ध्यान रखें. एंडलेसली नहीं खाना है कुछ भी, वरना कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होगा. चाहे आप वो कैल्शियम लें, B12 लें, एंडलेसली कुछ नहीं लेना. ड्रग हॉलिडे भी करना है, और मेजरली हमें वो 3 मील्स को करना है. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी होता है. So especially diabetic patients, they have got a very slow movement of in the stomach, in the intestine. So आप 3 की जगह 5 मील कर लो, छोटा कर लो उसको. Okay, don't have a full meal in the lunch or late evening, then you'll have lot of other gastric issues. So ये छोटे मोटे modifications you can do within the family. आपको पता है आपकी फैमिली में डायबिटीज है, so there are few things which are totally should be avoided. आम नहीं खा सकते हैं. I mean, वो चीट डे लोग बना देते हैं, एक महीने में एक बार खा लेंगे, but one really has to work on the sugar levels, not only through the diet but also through the exercise. जो हम बात कर रहे थे 30-40 मिनट का movement, any movement. It could be a balancing exercise like yoga. It could be a open gym activities which is easily available free of cost near your house, or it could be simple walking, brisk walking, or cycling, cross trainer, anything which you can sustain. आप आज से शुरू जिम कर दो बट 10 दिन बाद छोड़ दो. That's not the way we want to advise any exercise. Any activity which you would want to pursue, you love it and you will not get fatigued easily, that you can do. Sir, to a couple of points. एक तो I think it's also very important जो आप कह रहे हैं कि दिन भर भी एक्टिव रहें. सर ये 30-40 मिनट वॉक करके फिर दिन भर एक्टिव नहीं रहना will not solve the purpose. So दिन भर एक एक्टिव रहना बहुत जरूरी है सर. और खाना सूट जो आपको कर रहा है, आपके स्टमक को सूट कर रहा है. अपनी फूड एलर्जीज देख लीजिए. अब सर एनी एक्सट्रीम इज नॉट गुड. Any kind of extreme is not good. So we can plan our week. We can plan the week for the family कि किस किस्म की दाल, चावल, रोटी, सब्जी क्या खाना है. सर इस पे थोड़ा सा दूध के बारे में बताइए, because there's a lot of talk about milk. जी. इनफैक्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं आजकल तो दिल्ली में रह के दूध तो इतना खराब होता है, हम किस पे ट्रस्ट करें, विच ब्रांड शुड वी टेक, कैसा लेना चाहिए, या विलेज से लेके आए, काऊ का लें, बफलो का लें, किसी और चीज का लें, या सोया मिल्क लें. लॉट ऑफ इंडियंस हैव गॉट लैक्टोज इंटॉलरेंस जिससे उनको लूज मोशन हो जाता है. सो वन थिंग इज किसी को सूट नहीं करता. इफ समबडी इज एलर्जिक, significant population of India has got some lactose intolerance issue, so they may not be able to digest it. So for those people, I think you can find alternates like yogurt and buttermilk and other things which also would have enough calcium, but they may not give you that kind of problems. Probiotic dahi hota hai, yogurts hote hain, that are also very safe for the stomach, who are actually people suffering from lactose. If somebody is even then intolerant to those products, I think soya milk is another alternate, almond milk is another alternate. People have started resorting to these, but of course only a upmarket kind of population is resorting. But again, let's accept the fact the majority of population would want to have a very affordable kind of milk, so may not be in reach of most of the population. So if we see the value and the propaganda around a vegan diet or no milk diet, or totally exclude that, I think I still belong to the old school. I don't think that's right. Almost 5 times I would say 6 times, except for Sunday, I would take milk with bhige almonds and turmeric mixed in that. Even today, yes, one factor for a diabetic patient or little obese patient, morbid obesity, you can opt for a toned milk, so that at least reduce the fat content. But taking a toned milk from a reliable source, I would not say कि भाई आपने थैली वाला DMS कर लेना है या आपने टेट्रापैक लेना है. There has to be a reliable source
जिसका चेन मेंटेन्ड हो, कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो, ओपन बॉक्स ना हो, खुला मिल्क ना मिल रहा हो जिसमें अडल्ट्रेशन हो, वो नहीं होना चाहिए. Rest, I would say, somebody who's more worried about the fat content, okay, instead of buffalo, you can take a cow's milk. There's one important thing for the kids, especially the who are weaning from the mother's milk, and then they want to introduce something. So I think cow's milk is much safer on allergies also. For kids, that could be a good alternative to start. I have seen people who, in houses where the small kids are given, the heavy milk like buffalo milk much earlier, egg much earlier, say first or second year, they have more tendency to develop allergies in later life. So lighter milk, which is cow's milk, is more easily digestible by the infant or a toddler, sensitive stomach. They can start with cow's milk, and then cow's milk is pretty healthy. I mean, I have seen two of my daughters growing, on all these things, and I don't think they've got any allergy in last 14, 15 years I've seen. So these are the areas where, as a parent, one can sensitize the stomach, to less allergenic products, and then gradually move on. Even for the elderly, I think if you talk about buffalo versus, cow's milk, cows is much, milder on the stomach. When you talk about a laborer, who has a very strong workforce every day, you know, living in a village, doing so much of hard work, even buffalo milk is easily digestible. That kind of fat content also gets digested and burned very well. Person who is involved in 10 hours of physical activity every day. So again, it depends on your lifestyle, your work. If you have to just get up, take a 300 ml glass of buffalo milk and go back to the office and sit there for 10 hours, and then come and have a big meal, skip the lunch, and then you sleep. I mean, that's not the right, product for you. So that's something which, is very important principle. Again, we want some order. We want to, customize according. In fact, the head of the family, the homemaker of the family can easily do that. They know the lifestyle. They know the preferences. Somebody may like mushroom. Mushroom is a fantastic source of calcium. A lot of people would have mushroom allergy. It's totally ruled out. They may not take egg. It's ruled out. So we have to find according to your taste, palate, your allergies. So homemaker is the best to decide for their home. Depending on their pocket, depending on the allergies, and what are their likes and dislikes. Somebody may not like paneer also. What to do? Okay, tofu is a very good alternative, but not available in every house. So these are the things which have to be kept in mind. And milk, I would say the brand milk is still going strong. Yes, there are many controversial thoughts, but I would still say that the positive value. So even when we take a medicine, we always weigh the advantages and side effects. So if advantages are significantly high, I think we go ahead and adjust with the 10% of side effect. Likewise, in milk, I mean, there is no scientific evidence that if it's harmful for you, the additional value, the nutritional value is always positive. So, the counter argument, yes, will be there, significant based on the facts and figure. But I think, I prefer to stay with conventional thing, milk with a proper fat content for your requirements. I think that's good enough. You can take it on a daily basis. Add on turmeric. I think it's a fantastic, affordable, and increasing immunity, increasing having a good anti-inflammatory properties. It's very good for your family. सर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक वी कैन मेक वेरी गुड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस आजकल Absolutely. एंड हम खुद भी माइंडफुल हो सकते हैं हम खुद भी थोड़ी सी समझ रख सकते हैं अबाउट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग Absolutely. है ना सर एंड हर चीज का एक तरीका बैलेंस किसी भी चीज की हमने फिर से वापस एक्सट्रीम नहीं करनी सर इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप personally because I've gone through this process you must understand what food is suiting you what is not suiting you and portion control is very important because when we load our system beyond what we need
The load is not just coming on the stomach, it's coming on our entire system. Yes. So here there is one very important concept which I always discuss, that a lot of people, they would get up, leave early for office और फिर वहाँ जाके breakfast करेंगे. They would have their breakfast at 11. Then they would just munch a little bit, but they would not have a proper meal, lunch, and they would straight away, they become hungry by 7 or 8. They would have a big meal. Okay, meal skipping, meal delayed, everything happens, especially in corporate world, because they are too much occupied with the work. Now, these are the people who get diabetes very fast. Why? Because what happens when you take a meal? If breakfast happens at 11, actually it was the overnight fasting you were doing since the last meal in the night, and you have to break that fast. So that cannot happen at 11 o'clock when the sun is already up. So it has to happen much early on, so that you don't get starved from, say, if the last meal previous night was 9 p.m. और आप 11 बजे कर रहे हो, it's almost about 10 or 11 hours. So you have to break your fast much early on. So if you don't do that, so for 11 hours there was no glucose coming inside the body, and suddenly there is a gush of glucose. Then what happens is body, how does they absorb the glucose? Insulin starts releasing from the pancreas. Okay, so now pancreas is like a reserve bank of India. So every person has got a bank of insulin. Okay, so बैंक में आपके 2 मिलियन यूनिट्स भी हो सकते हैं, 10 मिलियन भी हो सकते हैं, किसी के 50 मिलियन होंगे, किसी का जीरो भी होता है. जिसका जीरो होता है वो बचपन में उसको डायबिटीज हो जाता है, जिसको टाइप 1 कहते हैं. तो उनका बैंक शुरुआत से ही खाली होता है या बहुत मिनिमम होता है. ठीक है, तो मोस्टली लोगों का बैंक अच्छा होता है. अब वो क्या करते हैं, 12 घंटे का फास्टिंग हो गया, फिर सडनली बहुत सारा खा लिया. तो सडनली द बॉडी गेट्स इनटू दैट मोड कि ओ माय गॉड, सो मच ऑफ ग्लूकोज हैज कम इन. द pancreas start releasing excessive insulin to absorb glucose. So much of glucose has come into the system. So there is a shock which pancreas gets. तो बहुत सारा ग्लूकोज वो इंसुलिन छोड़ देता है. तो बैंक में से ज्यादा पैसे निकल गए एक ही बारी में झटके से. फिर क्या हुआ, फिर 12 घंटे कुछ नहीं हुआ, फिर वो आराम से सो रहा है. फिर सडनली किसी ने उसको जगाया, इतना सारा रात को उन्होंने पराठे भी खा लिए, नॉनवेज भी हो गया, अल्कोहल भी हो गया, एवरीथिंग. अगेन सो मच ऑफ ग्लूकोज रश है, भीड़ आई एकदम. तो भीड़ को क्लियर करने के लिए बहुत सारा पैसे निकाल दिए उन्होंने बैंक से अगेन. सो व्हेनेवर वी take so much of erratic breaks, and then we suddenly, obviously if you have skipped a big meal and after 10 hours again you eat extra, of course you will eat extra because you are hungry, and that much of glucose rush in the body causes the reserve bank to release lot of funds to manage that rush, or to manage a lot of security personnel to manage whatever intruders have come into the body. So when there is a disciplined amount of food habits, ओके 7 o'clock होना है, फिर 12 बजे 1 बजे लंच होना है, फिर 7 बजे डिनर होना है. बॉडी को पता है, ये सर्केडियन रिदम उसको मालूम है. अब आज आपने क्या किया, आप पूरी रात जागते रहे, आपका साइकिल रिवर्स हो गया. पीपल लाइक इन एयरलाइन इंडस्ट्री, द एयर हॉस्टेसेस मे नॉट हैव अ लाइफ बियॉन्ड 15 years of working because day night their biological clock goes for a toss. वो कभी रात कभी दिन. ऐसे ही जब बॉडी को ये कंफ्यूजन हो जाता है, 7 पे उसको रिलीज करना है इंसुलिन, उसे पता है रोज ये भाई इतना ही खाता है, वो उतना ही यूनिट रिलीज करेगा. अब आज आपने सुबह कुछ नहीं खाया, 12 बजे सडनली खा लिया. कल आपने सुबह भी खाया, फिर पूरा दिन छोड़ दिया, फिर 5 बजे आपने पिज्जा खा लिए. सो देयर इज लॉट ऑफ इरेटिक थिंग, सो बॉडी डजंट नो कितना रिलीज करना है. So there is a lot of shocks which keeps coming onto the body, and that's why pancreas bank finishes fast. तो जब खत्म हो जाता है तो इंसुलिन डायबिटीज हो जाता है. तो जो डिसिप्लिन से चल रहा है उसका बैंक बहुत थोड़ा रिलीज करता है, 10 यूनिट 15 यूनिट. उसे पता है इतना ही आएगा, इतना हमें डाइजेस्ट करना है. वो जब जो झटके से आता है तो वो फालतू रिलीज कर देता है, जो कि वेस्ट हो जाता है. अगेन यू हैव वेस्टेड द मनी, यू हैव वेस्टेड द वाइटल इंसुलिन currency.
So yes, these days why we see so many young patients having diabetes is because of this erratic meal plans and suddenly loading their system. अगर उन्हें खानी 2 रोटी थी वो 5 खा गए because 12 घंटे से कुछ नहीं खाया था. Okay, that is because of the hunger. But if they had taken 2 plus then 2 in the lunch plus 2 in the, that is a much better and a plan which the pancreas can easily manage with. If you keep shocking the pancreas, so you will get diabetes much early on, and that is what happening in people who skip meals, who take a sudden gush of cola or something. So that is one of the major cause for diabetes happening in young age. And all of this is affecting bone health. Absolutely, absolutely. Indirectly, then they are sedentary, they're not moving, it's causing a lot of osteoporosis in young patients. So I think what you have done today is driven home a very important point, that your nutrition, your lifestyle, your food, your movement, your rhythm of the day is the key to good bone health, and not Absolutely. doing any supplements, making informed choices, not just sitting and typing on Google and just eating whatever has been suggested without the correct expert advice. Absolutely. And That's very important. and sir, what suits your body, right, sir? Because Yes. everything is not going to suit everybody. Yes, you have to make your own. Okay, you may err initially, but within a year or so, you realize this is what I am able Yes. to digest. This is not for me. So those things should be absolutely clear for you and for your family, for which you want to care for, and you are responsible for providing them the right nutrition, especially the kids. Gee, sir. Sir, coming to women's health, we don't want to miss that. Pregnancy, post pregnancy, menopause, young girls, young boys also, but that I think you've told us how important it is to eat well and outdoor activity. But menopause, sir, and post pregnancy, very, very crucial periods. Yes, sir. So I take this episode of menopause as something which is a again a kind of a shock where there was a complete support system in the body, like a Yes. father for a girl. It was all along, till the time of marriage, and now the girl is on her own. So it's like the hormone was right there from the teenage till 50 years of age, and then suddenly gets away. And all the system, not just the bone, the muscles, the brain also starts to atrophy, the heart, the lungs, the liver, everybody gets impacted because that vital hormone is totally missing now. And then, of course, the aging process is already there. One thing which very important, जैसे बचपन में कहते हैं ना, पुराना खाया काम आता है. सो Yes. मीनोपॉज में अगर आपने जैसे बहुत सारी देखे होंगे कि 80 years में भी कई लेडीज होती हैं वेरी एक्टिव, वॉकिंग अराउंड, यू नो टॉकिंग नाइसली, नो स्पाइन प्रॉब्लम, दे आर डूइंग एवरीथिंग फाइन. But you would have seen similarly at the same time 50-year-old female, almost confined to home or maybe walking with a walker. So what happens is, जब हम पैदा होते हैं और 32 ईयर 34 ईयर तक हम अपने बोन मास को बढ़ा सकते हैं. देयर इज अ ग्रोथ. आप जितना अच्छा खाते हैं वो आपके बॉडी में स्टे करता है और धीरे धीरे आपके बोन स्टॉक को बढ़ाता है. अगेन द बोन बैंक बढ़ता है, स्टॉक बढ़ जाता है. तो आपका 34 ईयर्स तक स्टॉक बढ़ता है, फिर डाउनफॉल आता है. तो मान लिया आपने, मतलब पर्सन ए ने अपना स्टॉक बढ़ाया 50% तक, पर्सन बी ने स्टॉक बढ़ाया 80% तक, पर्सन सी ने 100% तक. अच्छा. उसके बाद सबका डाउनफॉल होना है. अब जिसने स्टॉक ही उसका छोटा है तो वो स्टॉक डिप्लीट भी जल्दी हो जाएगा. तो उनको जो इफेक्ट्स हैं बोन के, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल, वो अगले 10 साल में ही आ जाएंगे. जिसका स्टॉक ही 100 पे है, वो जब तक उस लेवल तक आएगा ऑस्टियोपोरोसिस के, उनकी उम्र 80-85 हो जाएगी. So that way, so old habits, old food, nutrition comes in handy in elderly, and the menopause effect is lesser in people who have done lot of good maintained discipline during the younger second and third decade. तो बोन मास जिसका अच्छा होगा उनको मेनोपॉज का इफेक्ट भी कम होगा. तो पुराना खाया काम जरूर आता है,
But yes, somebody who's approaching menopause एंड छोटे छोटे साइंस आने शुरू हो गए हैं, थोड़ा स्किन ड्राई हो रहा है, मूड इरिटेबिलिटी है, हल्के डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, जगह जगह बोन पेन्स होने लग गया है, ठीक है, थोड़ा सा स्पाइन कर्व हो रहा है। कई बार आप बोलेंगे ना आपकी हाइट छोटी हो गई है, पिछले साल तो आप लंबे दिखते आज छोटे लग रहे हैं, या हाइट थोड़ा कम हो रहा है, दैट मीन द स्पाइन इज ग्रेजुअली कर्विंग, इट इज अ साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सारी चीजें हमें इन फैमिली क्या होता है, हम इग्नोर करते हैं, अरे ओल्ड एज है इसलिए दर्द बता रहे हैं, जबकि वो ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका होता है या हो रहा होता है, हम उसको ऐसे ओल्ड एज करके टाल देते हैं। इंडिया में इट्स वेरी कॉमन, अचानक वो एक दिन लाते हैं, अरे माता जी तो सिर्फ बेड से गिरी थी, हड्डी टूट गई। कैसे टूट गई? वो अभी नहीं, वो 10 साल से प्रॉब्लम लेके बैठी थी, किसी को बोलती थी, वो उनको लगता था ये तो बुढ़ापे की निशानी है, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेल प्रिवेंटेबल, करेक्टेबल। If we have a high index of suspicion, any elderly female or more than 55 who has been into menopause for at least 5 years, I think they should know their bone density. They should get their bone density once. If it is a cause of concern, any negative value is there, they must consult and take a right treatment so that further damage gets minimized. So menopause is a transformational, is a change which most of the females, they're not prepared to handle because nobody has educated them. But as a head of the family, as a person who is to take care of other people, I think this education is very important for people who are approaching menopause. They should start preparing for that next 20 years, because one wrong step and menopause leads to a life changing problem, and then sometimes people are not able to come out of it at all. It's a proven study. Anybody who's got an osteoporotic hip fracture, 80% of people, they don't survive beyond 1 year. It's such as alarming data because hip fracture is almost a terminal event for majority of these patients who are suffering from severe osteoporosis. सर, ये कितने जरूरी माइलस्टोन्स ऑफ लाइफ है, व्हाई आर वी नॉट प्रिपेयरिंग? बिकॉज उस एज में एक तो उतनी एजुकेशन मिल नहीं पाती आपके थ्रू। आज पता नहीं कितने हजारों लोगों को ये पता लगेगा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि सब तक ये मैसेज पहुंचाना और उसको सीरियसली लेना। मैसेज चलो सबको पता होगा भी कैल्शियम नहीं खाएंगे हड्डी खराब होगी, टूट सकती है, ये वो सबको मालूम है, लेकिन उसको उतना सीरियस प्रिवेंटिव जो माइंड है ना, हर जगह का है, अच्छा चोट लगेगी फटाफट पहुंच जाएंगे, दर्द हो रहा है अच्छा कल चलेंगे परसों चलेंगे, वो एक एटीट्यूड है कि प्रिवेंशन की तरफ फोकस कम है। चोट लग जाने के बाद, बीमारी हो जाने के बाद इलाज की तरफ फोकस है, एंड देन द पीपल से कि यार ये तो पहले आना चाहिए था तो शायद हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम सबका फोकस हॉस्पिटल का नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि घर में सबसे पहले जो चीजें चेंजेस करने हैं वो किए जाएं, और अपनी अवेयरनेस तो हो कि इस एज में ओल्ड लेडी है घर में तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जेंट्स है उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब वो घर में चलते का रास्ते में ही 10 चीजें ऑब्स्ट्रक्शन है, वो उसी में ही गिर जाते हैं, वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, तो क्या हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं घर में? ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो सिर्फ अवेयर कराने की जरूरत है। बाकी तो आई थिंक एवरी इंडिविजुअल इन दी फैमिली, द सन एंड डॉटर, दे आर वेल इनफ well informed to get all these changes for their dear parents. सर, पर ये ध्यान रखना कितना जरूरी है। 20s में हमें पता है 30s आने हैं, 30s में पता है 40s आने हैं, 50 आना है, 60 आना है। परमात्मा सुख रखे, आप 70-80 करें, लेकिन वो हर स्टेज के लिए हमें पता है दैट इट्स कमिंग, एंड येट वी आर Yes, नॉट प्रिपेयरिंग। सर, कई लोग not, बोलते हैं ना मेरी हड्डियों में बहुत जान है, मैं कर लूंगी। वो हड्डियों में जो जान चाहिए, सर वो जान तो चाहिए। वो लगता है उनको है, बट एटलीस्ट दे शुड गेट इट वेरीफाइड, दे शुड कंफर्म इट, एंड Yes. if all the steps they are taking, I really respect those patients who just walk in, I ask them कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, I am approaching 50, I am approaching 45, I thought of getting a health package done, and I just wanted to come and see whatever my reports are, or what is the bone density, or even if my bone densities come out to be okay, I want to know how do I maintain the same thing for next 5 years, 10 years, 20 years. So they're very aware. People are concerned. I see such
people now coming more frequently after COVID hit, but the number is still less. It is much better than 2018 or 19 early, but now this number has to increase. There has to be a time when every family is aware of their own health. They can monitor and drive the family's health by themselves. They don't have to consult a senior consultant, go there 2 hours, wait, and then consult for this. They should be themselves aware of managing the basic things. सर, तो जांच बहुत जरूरी है, खाने पीने की समझ बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट्स की समझ बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, कहाँ ट्रीटमेंट चाहिए, वो बहुत जरूरी है. तो ये सर कितनी एक विचित्र बात है सर, हमारे शरीर ने हमारे साथ रहना है टिल द एंड, एंड हम उस शरीर को ही अनदेखा कर रहे हैं. Absolutely. See, till the time all the organs are working fine, we don't value them. Now today I see somebody who doesn't have a functioning kidney, somebody who doesn't have a functioning liver, somebody who gets a fracture, how much crippled they get after that. So इससे पहले कि वो कोई डिरेलमेंट हो, क्योंकि एक चीज खराब होती है चारों पे इफेक्ट होता है. फैमिली में एक बीमार होता है, सारी फैमिली इफेक्ट होती है. ऐसा नहीं कि वो एक बीमार है तो बाकी लोग अपना काम कर रहे होते हैं. वो कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अफेक्टेड है. सो लाइकवाइज आवर बॉडी इज आल्सो a family of multiple organs. They have to coordinate, support and maintain the health overall. एक डिरेल होता है, सारे डिरेल हो जाते हैं धीरे धीरे करके. सो कहीं ना कहीं एक ये अवेयरनेस ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ की तो होनी चाहिए. मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें तो बात की बात है. एक अपनी सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ हैंडलिंग द फैमिलीज हेल्थ इन योर हैंड्स, टेकिंग सम डिसाइसिव स्टेप्स टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल. इनफैक्ट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे तो करेंगे. तो जो किड्स का जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे हैव टू गो फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन. They have to be taught much early on. अगर हमने उनको बचपन से हाई शुगर, हाई सॉल्ट और उन सब की आदत डाल दी तो they will never be able to come out of it. वो पहले से ही उनकी आदतें शुरू से ही चेंज करनी पड़ेगी. And you have to lead by example. जी सर, जी सर. सर थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताइए. लेट्स क्रिएट सम होप कि है, सप्लीमेंट्स है, इलाज है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. Because sir, dependence due to bad health is the worst possible phase to go through. It's सब सुख रहे हैं, सब ठीक रहे हैं. जी. तो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, जब हमारे पास यही प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं, so there are n number of things which we can do to mitigate, to reverse and to get them back on their feet and normal functional lifestyle. There are multiple things, starting from, of course, the exercise and lifestyle modifications will be the key factors initially, and thereafter the medications which have a significant impact on bone health. Vitamin D, as I told you earlier, calcium supplements, B12, and then moderate amount of protein intake, and on and off. Sometimes there are some specific things, जिसको किसी को यूरिक एसिड इशू है तो उसका मैनेजमेंट करना है, किसी को किसी और आर्थराइटिस का इशू है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए मैनेज करना है. तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है. कई ऐसे डिजीज हैं जो यंग एज में ही बोन हेल्थ कर देते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है. उनके लिए हमें और विजिलेंट होना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी यंग फोर्स को इफेक्ट करता है और वो बहुत बैडली इफेक्ट करता है. एज सो मच सो दैट पीपल 25-30 साल में इतने क्रिपल्ड हो जाते हैं कि उनको सर्जरीज की जरूरत पड़ती है. तो उनके लिए तो हमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट रखना है ताकि उनकी फंक्शनल लाइफ स्पैन अफेक्ट ना हो. सो मेडिकल ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें मेडिसिन हो गया, जिसमें सप्लीमेंट्स हो गए, करेक्टिव मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, जो बीमारी के रुख को ही बदल देता है, डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है. अगर वो नहीं लेते हैं तो वो बहुत खराब कर देगा जॉइंट्स को. लेने से वो बहुत ज़्यादा उनके रिलीफ देता है. वो चीज़ें हैं. देन आजकल हम सर्जरीज की जगह बीच में एक मिडिल पाथ है जिसमें हम रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करते हैं. आजकल बहुत सारी जगह पे कार्टिलेज खराब हो जाता है, डैमेज होता है, तो हम जॉइंट एकदम से चेंज नहीं करते.
या स्पोर्ट्स पर्सन है, इंजरी हो गया फुटबॉल खेलते हुए, ही वांट्स टू गो बैक टू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, हमारे पास उस कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए आजकल सॉल्यूशंस अवेलेबल है विदाउट रिजॉर्टिंग टू बिग प्रोसीजर्स. So that becomes a welcome change for especially a sportsman or a young population who would want to run, jump, dance, everything despite getting the treatment done and pain free. So regenerative medicine is catching up big time. अब ऐसा भी एक पॉपुलेशन है जो किसी भी कारणवश लास्ट स्टेज में पहुंचा है जिसमें मेडिसिन भी रीजनरेशन भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, तब हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस आती हैं जिसमें बहुत तरीके के प्रोसीजर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर फिक्सेशन और यहाँ तक कि रोबोटिक्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें आजकल. दैट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. बट यस, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि भाई हमें तो रोबोट से ही कराना है, हमें भी ये करना है. टेक्नोलॉजी सर्जिकल स्किल का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए. इट इज ओनली एन असिस्टेंट टूल. हम ब्लाइंडली रोबोट से नहीं करा सकते. कहीं ना कहीं रोबोट को, सर्जन को सिर्फ हेल्प करना है टू इम्प्रूव बेटर रिजल्ट्स. द प्राइमरी ट्रीटमेंट हैज टू बी फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर. टेक्नोलॉजी ओनली प्लेज अ असिस्टेंस रोल, नथिंग एल्स. बट जो असिस्टेंस है, it only improves the quality of end result, it improves the function. Yes, those technologies which can actually bring about change in the end result, they should be adopted. Which are only adding to the you can say the package, which is only adding to the patient's financial loss, they should be rejected. Not every technology is end result is the patient's outcomes improvement. So we have to be very choosy in getting the right technology for the patient's treatment. That's also, we are very skeptical in adopting till we are very sure that it's actually going to help in patient's recovery. So you're talking about robotics. I find it amazing, because when you're saying, they're saying कि हमें एक robot से कराना है. Sir, how can you hand over your life to something which does not have a conscience or which cannot care? You need somebody monitoring that robot who has that emotion of care and has a conscience. Again, again an extreme presence of mind also, because Yes. they would not have a mind. So at this point I want to clear one thing. There are different types of robot available in the market. They are guided by the surgeon only. Yes, software malfunction and surprise abnormal movements of the robot has been reported in the literature that has caused significant damage to the patient's body. That has been reported in Western world also. So that's why even if somebody, so if I use a robot, I should also have a plan B. God forbid if that thing is beginning to affect the patient body, how do I take an immediate action to reduce or mitigate or avoid any damage to the body? So that's something which has to be learned properly. Only then a responsible surgeon can actually utilize robotic technology for the betterment, not to make the things worse. So robot will not do the thing independently, that's for sure. Okay, and healthcare robot versus robot used in aerospace or manufacturing or automobile is very different. There, even if the vehicle goes wrong, the life is not affected of any individual. Here, thing is different. Life and death can be a havoc for a particular person. Ji sir. Sir, there's so much to ask you. Hey sir, can we talk for another 2-3 minutes? Do you have time, Okay, sir? of course, of course. जी सर, ये बोन क्वालिटी क्या होती है? ये व्हाट इज बोन क्वालिटी दैट दे यूज अ टर्म कॉल्ड बोन क्वालिटी? जी सर, बोन क्वालिटी को हम मतलब इट्स अ सिंपल टर्म व्हिच इज एक्चुअली अ टेक्निकल टर्म, मुझे बोन डेंसिटी हो गया, जो कि हमारा बेस होता है कि हम क्लासिफाई करेंगे किसकी बोन क्वालिटी कैसी है. एक नॉर्मल बोन क्वालिटी होती है, एक ऑस्टियोपेनिक बोन क्वालिटी होती है, एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन क्वालिटी होती है. तो ये जो तीन वैरायटी है, एक तो नॉर्मल हो गया, जिसका इन तीनों को हमने क्लासिफाई करने के लिए, समझाने के लिए हम एक बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं, जिससे हमें उसकी वैल्यू पता लगती है.
एक वैल्यू रेंज होती है जो नॉर्मल में आती है, उससे नीचे होगा तो ऑस्टियोपिनिया में आती है, उससे नीचे होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस आएगी। तो जितनी नीचे जाती जाती है उतना ही रिस्क आपको इंजरी का, डैमेज का, फ्रैक्चर का बढ़ जाता है। तो जिसकी बोन क्वालिटी बहुत लोअर साइड पे है उनको तो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी उस बोन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनको कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इवेंट या फ्रैक्चर या कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो सर इसीलिए ये पूछा मैंने आपको कि ये बोन क्वालिटी तो डिटेक्ट हम कभी भी कर सकते हैं ना, किसी भी उम्र में ये टेस्ट करा सकते कर हैं। सकते तो इस जिनकी कम है वो एक तो खुराक है सर, एक सप्लीमेंट्स है, एक मूवमेंट है, एब्सोल्युटली। फिजियोथेरेपी है सर। फिजियोथेरेपी, मूवमेंट्स में एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप की, और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कहते हैं वो है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं उसमें। तो बोन क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का जिसमें -5 तक भी था, वो -4 आया, फिर -3 आया, फिर +1 तक भी गया। तो वैल्यू इंप्रूव होती जाती है इफ यू आर रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड गिविंग द राइट ट्रीटमेंट। ये किसी भी उम्र में बोन क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है सर? अगर 50-60 साल की उम्र में हम टेस्ट करा रहे हैं बोन क्वालिटी के लिए, किसी भी एब्सोल्युटली। उम्र में इंप्रूव हो मैं सकती है जिनका सर? एग्जांपल दे रहा हूँ वो -5, 7, 75, 80 साल में थे, जो 5 साल मेरे ट्रीटमेंट में रहे, तो धीरे 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 वो माइनस से प्लस की तरफ आ गए। तो ये हर एज पे रिवर्सिबल है। किसका कितना डैमेज है उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और उससे हम उसको वापस लाया जा सकता पर सर होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। है। एब्सोल्युटली। उसके बिना आप सोचो जी, आपने एक दवाई ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, ठीक हो गया सब कुछ, ऐसे कभी नहीं होगा। और आपने सिर्फ डाइट में मॉडिफिकेशन किया बट एक्सरसाइज नहीं किया, बैठे रहे, तो भी आपको फुल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो इट्स अगेन अ बैटरी ऑफ थिंग्स, मल्टीपल areas which we have to attack. One is nutrition wise, one is exercise point of view, one is sunlight exposure, one is your lifestyle modification, rest is based on medical treatment. Even many a times lot of people go for ayurvedic massages, treatments. They also bring about सिग्निफिकेंट स्पाइन प्रॉब्लम्स में बहुत लोग ये आयुर्वेदा और उसमें जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को उससे रिलीफ मिलता है। जहां वो एलोपैथी का 10 साल से ट्रीटमेंट कराया, नहीं फायदा हुआ, लेकिन ये कराया तो वो राइट। कायरोप्रैक्टिस इतना चल रहा है, सेराजिम चल रहा है, ये सारे ऑल्टरनेट क्यों चल रहे हैं? कि कहीं ना कहीं कोई कमी है किसी में। नो सिस्टम इज परफेक्ट। आपको अगर ये चीज सूट नहीं कर रहा है, सो देर आर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको लेना। ऑफ कोर्स वो दुनिया जहाँ के आपको एडवर्टाइजमेंट है, आपको कौन सी चूज करनी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सो और अब वो वो एजुकेशन से ही चीज, आएगा। जी सर, और अब वो चीजें आ गई हैं कि अगर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा तो चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, वो अब आ गई है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। नाउ पीपल दे डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट होम्योपैथी और एलोपैथी, दे वांट द बेस्ट फॉर देम, वेदर इट इज अ मिक्स ऑफ थिंग। अब गवर्नमेंट का भी वो आ गया, मिक्सोपैथी हो गया है। दे आर रिजॉर्टिंग, दे वांट ब्रिंग द इंडियन सिस्टम मिक्स विद एलोपैथिक। उसका बेस्ट भी आ जाए, इसका भी बेस्ट आ जाए। अल्टीमेटली द गोल इज टू प्रोवाइड द राइट सोल्यूशन फॉर द पेशेंट। सर लेकिन एक और बात सर, बिफोर वी कंक्लूड, आप अपने एक इमोशन के बारे में बताइए। एज अ डॉक्टर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू? यू नो आपके अंदर भी होगा, आई गिव यू माय बेस्ट बट यू गिव मी योर बेस्ट आल्सो। Of course. So this association, the first time patient walks in and expresses the problem, the relationship between the physician and the patient starts right at that moment. So that association, and this is one of the rare association where patient, bestows full trust in a stranger. First time he is walking in, full trust. आप इमेजिन करो, वही चीज क्या वो किसी बाहर खड़े हुए किसी को बता सकता है जो वो अंदर रूम में बताता है? कभी नहीं बताता। नहीं सर। सो हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है to actually live up to that expectation, try to give the best possible solution. Unfortunately, as the time is progressing, in fast-paced life, because of the overall lack of trust between these two parties, things are not very transparent. From either side, I would not say patient they don't trust healthcare institutions or the clinicians so well as used to happen 20 years ago. So problems have been there from both sides, but I would say
that if you take every patient as an individual, like from your own friends and family, where you're going to advise what's best for them in that current scenario. And of course, in the decision making nowadays, gone are those days when the doctor says, okay, do this and that's about it. No, we have to involve the patient in every decision making. Okay, so to approach a particular disease or a problem, there can be 5 options, 5 tablets or 5 types of surgeries. So you have to explain them each and everything, pros and cons, not hiding cons of a particular thing, not promoting pros of a particular treatment. You have to transparently tell. If you are able to reach that level of confidence, I think that you have already won the heart of the other individual. Involve them in the informed decision, whatever you want to take. And obviously, they will ask you, what's best for me? Please do that at the end of the day. Because they're not clinicians. But if we give them a complete picture, a complete platter, this is the problem and these are the options. According to me, this is the best for you. And then go ahead. So that level of confidence and positivity will reflect even in the results also. When the patient trust is full, they will also respond to treatment in a better way. जी सर, सर थैंक यू। लेकिन फिर वो जब 2 हाथ जुड़ेंगे तो मुट्ठी बनेगी ना सर। सो दवाइयों के साथ, ट्रीटमेंट के साथ प्लीज़ हम सबका जो पर्सनल एफर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड वही आई थिंक हमारे जो ब्लेस्ड डॉक्टर्स हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हम अपना एफर्ट पूरा लगाएँ और फिर दे गिव अस द बेस्ट। Yes. जी सर, शुड वी कंक्लूड सर? Should we conclude? Ji sir. Sir, thank you so much for so much of insight, and it's such an important topic, sir. 206 bones and living tissue, and how everything is interrelated. It's Yes. such an important concern, sir. Yes. Ji sir. Sir, our best wishes to you. Sir, our best wishes. Please keep up all such blessed work that you're doing, sir. Thank you, sir. Best wishes to you and your team, sir. Thank you. Thank you. Pranam. Thank you. Thank you. जय धारी माँ। हमारी ऑडियंस का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. जय धारी माँ जी।